Okay, so today I will start with the fifth unit of your syllabus, that is special theory of relativity, right? So, theory of relativity, actually, before going into this special theory of relativity, I just want to discuss some basic concepts. They just are the, you can say, they are the foundation for this special theory of relativity. The first one is ether hypothesis. क्या होता है ether? Ether hypothesis क्या था वो देखेंगे. But before going into that also, I will just want to discuss what do you mean by a frame of reference, right? Like in last offline classes, we have discussed what are frame of reference, right? We have discussed frame of reference, center of mass frame of reference, as well as laboratory frame of reference. So, as I was telling you in previous lectures, the frame of reference are nothing. Basically, the physical quantities like displacement, velocity, time, mass, any physical quantity, they are not absolute, right? And these quantities, any physical quantity, are actually the measurement of this physical quantity are relative to each other, are relative, and of course they depend on the reference and the state of observer. जैसे आपने एक पोजीशन किसी चीज का मेजर किया, लेट्स से you have measured a position of an object, and let's say the position of an object was given by coordinates xyz. Now these xyz are nothing, actually these are the coordinates with respect to a frame of reference, fixed frame of reference, right? And of course the position will change if I take another frame of reference, right? So I can say a system of coordinate axes which defines the position of a particle or any physical parameter. And of course, it specifies the location of an event. It can also specify the location of an event. That particular thing is that particular set of coordinate are called frame of reference, right? So, okay, the frame of reference can be of any type, any shape, even the shape of frame of reference can be other. The parameters which defines the position, which defines the physical parameters can be different. But the simplest frame of reference we can see is a Cartesian coordinate system in which we just measure the XYZ coordinates, right? But generally, for an event, we use four coordinate system, which is XYZ and T, right? Time, the parameter time should also be included in the coordinate system so that it can define any event in the system. जैसे कि इस position पे हुआ कोई event and इस time पे हुआ. So these four coordinates can describe any physical parameter very effectively. So all these things are actually refers to your frame of reference. Now there are various type of frame of reference, but in general, related to this type of theories, your special theory of relativity, we have two different type of frame of references. One is inertial frame of reference, and another is non-inertial frame of reference. क्या difference है non-inertial and inertial frame में? Okay, I will go with the name only. Just as I have told you, what do you mean by inertia, right? So inertia is nothing. Inertia is the inability of a body to change its state of motion. If it is in rest, it will remain in rest. If it is in motion, it will remain in motion. So inertia is the inability of a body to change its motion. So from inertia, I can state that the inertial frame of references are those frame of references in which law of inertia is followed. In which law of inertia is followed. कि अगर कोई
बॉडी रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, and if it is in motion it will remain in motion until or unless a force is applied on it. So law of inertia should be followed in a frame of reference, then that frame of reference will be called as inertial frame of reference. नॉन इनर्शियल के कौन से फ्रेम है? जिनमें एक बॉडी विदाउट एनी फोर्स इट विल चेंज इट्स मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन। एक मोमेंट पे रेस्ट पे था, नेक्स्ट मोमेंट पे वो मोशन में आ गया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, दैट मींस लॉ ऑफ इनर्शिया आर नॉट फॉलोड। सो द frame of references in which this type of things are happening, those frame of reference are called non-inertial frames. While if law of inertia is followed, then that particular frame of reference is called inertial frame of reference. Some of the example of inertial frame of reference are theoretically, some examples are that if a frame of reference is, let's say its frame of reference is at rest or is moving with a constant velocity, or you can say acceleration is zero. These type of frame of reference are actually inertial frame of reference, and in these type of frame of references, yes, law of inertia will be followed. जैसे आप अभी अपने रूम में बैठे हैं, अगर आप रेस्ट पे है, आपके पास में कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, तो जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो रेस्ट पे ही रहेगा। कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। दैट मीन्स अराउंड यू, in your environment, in your room, law of inertia is followed. That means a frame of reference rigid to your walls, rigid to your room is can be called as a inertial frame of reference. Suppose किसी ऐसा कोई मोशन है, okay, suppose you are traveling in a bus and that bus is traveling, the bus is moving with a non-zero acceleration, either it is retarding or it is accelerating, then in that case law of inertia will not be followed. अगर कोई चीज हवा में है, आप जैसे ही उसको एक्सेलरेट करते हैं, that will feel some force, right? So any fictitious force, if any fictitious force is being applied, is being applicable on a body at any frame of reference, then that frame of reference will be called non-inertial frame of reference. If it is not moving with a constant velocity, if it is accelerating or it is retarding, then some fictitious force will be applicable on a body, and then its state of motion will be changed without application of any force. Then those, of course, in those cases, the law of inertia will not be followed, and those frame of references will be called as non-inertial frames, right? तो ये क्या है? कोई भी बॉडी जो सेम वेलोसिटी से मूव करती है, और ये क्या है? कोई भी बॉडी जो नॉन जीरो एक्सेलरेशन से मूव करती है, तो वो बॉडी खुद ही एक अपने आप में नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। जैसे कि मान लीजिए आप बस में बैठे हैं और वो बस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो आप एक बॉल को हवा में उछालते हैं, तो दैट बॉल विल फील ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया है, जो अपवर्ड फोर्स आपने लगाया है, एंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ दैट बॉडी, ट्रेजेक्टरी ऑफ दैट बॉल will be decided only by these two type of forces, the upward force from your hand and gravitational force, right? तो अगर केवल यही दो फोर्सेस की वजह से ट्रेजेक्टरी डिफाइन होता है और वो बॉल वापस आपके हाथ में आ जाता है, दैट मींस लॉ ऑफ इनर्शिया वर फॉलोड, एंड यू कैन कॉल दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट बस एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाइल सपोज आपने बॉल हवा में उछाला और उस बस ने उसी मोमेंट पे, उसी दौरान एक्सेलरेट कर लिया, तो वो बॉल जो है आपकी वो पीछे चली जाएगी। आपने उसको अपवर्ड फोर्स दिया था, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, तो पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं था। दैट मींस सम फिक्टिशियस फोर्स वर आल्सो देयर इन दैट केस, बिकॉज ऑफ दैट वो एक रिजल्टेंट बना होगा फोर्स का। आपने ऊपर उछाला है, ग्रेविटी नीचे ला रही थी, बट एक रिजल्टेंट बना होगा, आपने जो ऊपर उछाला है और एक रिजल्टेंट बना था फिक्टिशियस फोर्स, पीछे की तरफ जाएगा, एंड देयर वाज अ रिजल्टेंट फोर्स। बिकॉज ऑफ दिस वो बॉल आपके हाथ में वापस नहीं आएगी, because the law of inertia are not followed in that case, and those are non-inertial frames, right? So inertial और non-inertial frame का reference definition
आपको आना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके. Inertial frame, in practice, the definition of inertial frame is quite clear, but you can see if I try to find, if I try to define, if I try to give an example of inertial frame, then I will not find any frame which I can call practically as a inertial frame. Right? कि आप अपने रूम में बैठे हैं तो मान लीजिए आपके सब कुछ ठीक है, कोई फोर्स फिक्टिशियस फोर्स नहीं लग रहा है, but still in that case you can see you are on the surface of earth, right? And earth is rotating as well as revolving around the sun. So with respect to sun, yes, with respect to any star, with respect to sun, yes, you are moving. So not moving, you are actually accelerating, because that is a circular motion. In circular motion, yes, of course there will be acceleration. So if acceleration is, if you are on an accelerating frame, then that means that frame cannot be an inertial frame, right? Again, आप कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सोचिए, अर्थ से बाहर पे भी सोचिए, मून पे भी सोचिए. मून, again moon is revolving around the earth, so there will be a non-zero acceleration on that body, right, on that frame of reference. So inertial frame practically कहीं पे भी exist नहीं करता है, sorry, theoretically कहीं पे भी exist नहीं करता है. अगर आप सन को भी देखेंगे, sun is again revolving around something, around the center of galaxy and all that. So you cannot have, theoretically you cannot have any inertial frame, not a single inertial frame. But yes, practically you can see if there is no motion without any force, then in that particular system you can call that particular system as a inertial frame of reference, right? So फिर आया एक इसमें है ईथर हाइपोथेसिस. ईथर हाइपोथेसिस ने क्या कहा कि suppose you have a inertial frame of reference and you have a body, and that frame of reference is at earth surface, is at earth surface. Now what they think, in the at the end of 19th century, at the end of 19th century, what they think is that when light is traveling in space, when light is traveling in space, it requires a medium to propagate. साउंड का इससे काफी पहले सब कुछ पता चल गया था हमें, तो साउंड को मीडियम चाहिए, उनको लगा लाइट को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी मीडियम चाहिए, एंड दे रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट. So they call that medium as ether. They call that medium which is outside the our this earth, right? In free space, they call it they call that medium as a ether, and they say if ether is stationary, let's say the particles of ether are like this. If ether is stationary and earth is rotating or revolving, then there must be a drift between ether and earth surface or earth coordinate system, I will say, right? उन्होंने क्या समझा कि हवा नहीं है बाहर, अर्थ के बाहर हवा नहीं है, एक और मीडियम प्रेजेंट है. You can call that medium as a vacuum also. Now we are calling that medium as vacuum, but yes, at that time they call that medium as ether. And of course, if earth is rotating and revolving, there will be a drift between this ether and the earth coordinate system. जो अर्थ के ऊपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है उसके बीच में और ईथर के बीच में एक ड्रिफ्ट होगा. ड्रिफ्ट होने से क्या होगा, लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज v, and in this coordinate system, let's say a particle has velocity u, then the total velocity of this particle as observed from ether, the total velocity of this particle as observed from ether medium, it will be u plus v, right? It will be u plus v. They thought something like this
कि ईथर का ड्रिफ्ट जो है अर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, उसकी वजह से जो वेलोसिटी क्रिएट होता है, दैट वेलोसिटी विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द मेजर्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर अर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो इस ईथर हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, इस ईथर हाइपोथेसिस को उन्होंने प्रूव करने के लिए दे बिल्ट अ एक्सपेरिमेंट, which is called Michelson-Morley experiment, a very famous experiment, Michelson-Morley experiment। ये सब उस टाइम की बात है जब आइंस्टीन पिक्चर में नहीं आया था, ये सब उस टाइम की बात है। इट मस्ट बी अराउंड, आई थिंक दिस माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज डन इन 1890 or something, right? So 15-16 years before the Einstein come into picture, they were devising something like this. They were thinking कि ईथर कुछ है, ईथर का उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया, उससे उन्होंने कुछ चीजें प्रूव करने की कोशिश की, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। एंड दैट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स, राइट, ऑप्टिक्स पे है बेस्ड। मैं बताऊंगा उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और उनके रिजल्ट्स क्या रहे। बट ऑप्टिक्स हमारी बहुत पहले आ गया था सिस्टम में, 1650 के आसपास ऑप्टिक्स में हमने काफी कुछ कर लिया था, और ऑप्टिक्स की नॉलेज हमें थी। तो विद द हेल्प ऑफ दैट नॉलेज, एक्चुअली वी वर ट्राइंग टू establish that yes, this ether is present everywhere around the earth, in the whole universe, and there is a relative motion between this ether and the planets, and of course this ether affects us also. So to prove that thing, to prove this thing, all this beautiful ideas, they had actually devised a experiment which they call as Michelson-Morley experiment, right? So the basic aim of this Michelson-Morley experiment was to search for a fundamental frame of reference, right? Fundamental frame of reference. They call this ether as a fundamental frame of reference. With this particular frame of reference, this particular ether is your fundamental frame of reference, and with respect to this frame of reference, with respect to this ether, all other things are moving. Like Earth is revolving, Earth is rotating, Moon is rotating, Sun is rotating, everything is rotating, revolving, but this ether thing is stationary, absolute stationary, right? So they were calling this ether as theoretically, they were calling this ether as inertial frame of reference. So the aim of this Michelson-Morley experiment was to search for a fundamental frame of reference. ठीक है, तो बनाते हैं, क्या क्या किया इन्होंने माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट में, देखते हैं। So they first took, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, यहां से ही शुरू हुआ है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल derive the equation, the famous equation E is equal to mc square from these topics, right? जो आइंस्टीन ने E is equal to mc square दिया था, उसका सबसे पहले वाला पार्ट है ये माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट। So they have taken a source S, एक लाइट सोर्स है, एक लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है, and the source is placed at the focal point of this convex lens. So if this is placed as a focal point, then it will create a almost, I am calling this as almost parallel wavefront, right? So let's say this convex lens, with the help of this convex lens, a source is placed at the focal point, and we have created a plane line, plane wavefront, right? Now this plane wavefront, we have a glass plate, we had a glass plate which is polished at the back of this, back of its side, right? इस पे सिल्वर पॉलिश है, इसके बैक साइड पे सिल्वर पॉलिश है, and the reflectivity and transmission coefficient of this plate, this polishing, the reflectivity and transmission coefficient of this plate is 50%, right? उसका क्या मतलब है कि जो भी लाइट रे इस पे आएगा
the intensity of those light ray, 50% of the intensity will be reflected, 50% of the intensity will be transmitted. इसकी हाफ पॉलिश किया हुआ है. अगर इसको 100% पॉलिश कर देंगे तो 100% रिफ्लेक्शन आ जाएगा, 0% ट्रांसमिशन हो जाएगा. But this is partially polished mirror such that reflectivity and transmittivity both are 50%. So in this case, let's say a ray enters into this, right? This ray travels this glass, वो सारा अपना रिफ्लेक्शन के रूल्स लगा लो, नीचे के पोर्शन से रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि सिल्वर पेस्ट वहां पे है, बाहर निकलेगा थोड़ा सा, फिर ऊपर जाएगा, राइट. 45 के एंगल पे रखा हुआ था ग्लास प्लेट, सो अगर 45 पे करेगा तो वापस जब बाहर निकलेगा इट विल बी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे बाहर आएगा. ग्लास को 2 बार ट्रेवल किया, लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ है, ग्लास को 2 बार ट्रेवल किया है, फ्रंट फेस से आया है, लोअर तक गया है, फिर रिफ्लेक्ट होके लोअर से वापस फ्रंट पे आया है, और ऊपर एक मिरर है, उस मिरर पे जाके इंसिडेंट हुआ है, राइट. लेट कॉल दिस एज मिरर M1. दिस पॉइंट आई एम कॉलिंग एज B. सो दिस आई एम कॉलिंग एज रे 1. दिस आई एम कॉलिंग एज रे 1. रे 1 ने इस ग्लास प्लेट में टिल्टेड 45 डिग्री टिल्टेड ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट किया, उसमें से पास हुआ, लोअर पोर्शन से वापस रिफ्लेक्ट हुआ, 2 बार इसमें से पास हुआ है, एक बार जाते वक्त पास हुआ है, एक बार वापस आते वक्त पास हुआ है, और फिर ऊपर जाके मिरर पे इंसिडेंट हुआ है. नाउ इफ इट इज इंसिडेंट ऑन मिरर एट 90 डिग्री, ऑफ कोर्स इट विल ट्रेस बैक इट्स पाथ, गया और फिर वापस आ गया, वापस आके now again it will enter into this medium, again it will enter into this plate, and let's say now at this time this ray come is transmitted. So if it is transmitted it will come down, वापस भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, बट मान लीजिए कि उसका 50% प्रोबेबिलिटी है नीचे आने का. So this ray 1, this point I am calling as A. This ray 1 has traveled thrice the glass plate. And it can follow this path. गया यहां से, फिर इससे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर B पॉइंट पे गया, फिर वापस A पे आया और A से बाहर आ गया. लेट्स से ये आपका जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उस पे बाहर आ गया. Now this mirror was partially polished and only 50% of rays were going upward. Rest of the 50, let's say, are being transmitted through this and they are going something like this. And let's say I am calling this ray as 2. Now this ray, एक reflected ray हो गया, एक transmitted ray हो गया. This ray, let's say, has incident angle with another mirror 2. And it will be, of course, it will reflect back. And at point A, it will again reflected toward the observation point 2. If I talk about this ray 2, एक बार इस ग्लास प्लेट से पास हुआ है, P1 मान लीजिए इसका नाम रखा है, एक बार पास हुआ है, पूरा ऊपर से आया, नीचे तक निकला, ट्रांसमिशन का कोफिशिएंट था, उसकी वजह से बाहर निकल गया और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया, नीचे वाले पोर्शन से ही वापस रिफ्लेक्ट हो गया. सो रे 2 has traveled only once through the glass plate. Only once through the glass plate. Now, इस टाइप का जो मीडियम है, अभी तक ईथर का मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया है. आई एम जस्ट डिस्कसिंग द रे ऑप्टिक्स ऑफ दिस सेटअप, राइट. सो पार्शियली पॉलिश्ड मिरर मैंने P1 लिया, ग्लास मैंने P1 लिया, आधा लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद वापस आया, उसी ग्लास से पास होकर नीचे आ गया. जो आधा लाइट बचा था शुरू वाली से इंसिडेंट रे से, वो
एक बार पास होने के बाद P1 से मिरर पे गया, मिरर से वापस रिफ्लेक्ट हुआ, P1 के नीचे वाले एंड से ही रिफ्लेक्ट होके नीचे चला गया. सो आई कैन से द लाइट रे 2 हैज पास्ड वंस थ्रू द ग्लास प्लेट while right ray 1 has passed thrice the glass plate. 3 बार उसने पास किया है ग्लास प्लेट को. एंड लेट्स से, इस पॉइंट को मैंने सी बोला है, लेट्स से द ऑप्टिकल पाथ ए बी is exactly equal to AC. The optical path AB is exactly equal to AC. The distance AB is exactly equal to AC, let's say. So, the light which are traveling, ये 1 था, ये I लिख देता हूं. I means incident ray. जो incident ray था, उसका 50% 1 में रहा, उसका 50% 2 में आया. And both of these rays has traveled the geometrical distance, the same geometrical distance AB and AC, but their optical path length are different because एक ने तो रे 1 ने तो 3 बार ग्लास प्लेट को ट्रेवल किया है, रे 2 ने एक ही बार ग्लास प्लेट को ट्रेवल किया है. So to compensate this, I will use another glass plate of same thickness at this point. Now, if you look for second ray, एक बार यहां से पास हुआ ट्रांसमिशन से पहले, फिर दूसरी बार इस P2 के अंदर से गया, फिर एक बार वापस जब रिफ्लेक्ट होके आया तो फिर गया. So again, with the help of P2, I will write with the help of P2, ray 2 is also passing thrice the glass plate. So now this ray 2 is also has same path length as the ray 1 was, ray 1 had, right? AB geometrical path तो पहले ही सेम था AB AC, अब आपने optical path भी सेम बना दिया. So for light ray 2 there has to be an extra glass plate which is called compensating glass plate to compensate the optical path. Now with this particular geometry I can say the optical path for ray 1 is exactly equal to optical path for ray 2, right? ओके, सो अब देखते हैं इसमें आगे क्या क्या कैलकुलेशन करना है हमें. Now as distance AB and AC are equal, both ray from M1 and M2 will arrive at telescope in phase. अगर ऑप्टिकल पाथ सेम है तो देन दैट मीन्स रे 1 का फेज जो होगा that will be equal to phase of ray 2. The phase of ray 1 and phase of ray 2 will be same. And yes, the mixing of these two ray will give you a constructive interference. The superposition of these two rays will give you a constructive interference because path difference, optical path difference, I will say, not geometrical path. Now we have made optical path also same, optical path is same. So there will be no difference in phase and there will be a constructive interference between these two rays, guys. Now from this geometry I can say this ray which is coming on to plate 1 P1
has to be slightly divergent. Now, as this ray has slightly divergent, perfect वो नहीं होगी straight line, slightly divergent होगी. Now, because of this slightly divergent nature of this ray 1, there will be a slight path difference. There will be a slight path difference. Oblique incidence जब होता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा पाथ डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से रे 1 आ रहा है, रे 2 आ रहा है ऊपर से. रे 1 and रे 2 are, let's say they are coming like this. There will be a slightly path difference between these two rays, and they will make a interference pattern. With these are bright fringes, I will say bright fringes होगा और कुछ dark fringes भी होगा उसमें. These bright fringes and dark fringes are nothing. Fringes means एक pattern होगा bright और light का. These bright fringes and dark fringes are nothing. These are actually constructive and destructive interference of arriving from ray 1 and ray 2. रे 1 एंड रे 2 के पाथ डिफरेंस की वजह से जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसकी वजह से ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज आएगा. राइट. नाउ आई वांट टू सी if this Michelson-Morley setup, if this whole setup is dragging with respect to ether. अगर ये अर्थ सरफेस पे है मेरा सारा सेटअप और इसके चारों तरफ ईथर है. Now, if this whole setup is dragging with respect to ether, then how my interference pattern will change, that I want to see. Let's say the whole velocity of this setup is u. ईथर क्या था? अर्थ के बाहर जो स्पेस में है उसको ईथर बोला था. अर्थ के ऊपर जो वेलोसिटी है, लेट्स से द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ यू. Orbital velocity of earth is u. Let's say that is u. The orbital velocity of earth is, let's say that is u. So that means this whole setup, this whole Michelson-Morley setup is moving with a velocity u with respect to ether. This whole setup is moving with velocity u with respect to ether. Right. So they actually wants to, okay. So that if this whole apparatus is moving with respect to ether with a velocity u, then drift velocity of ether, I will say drift velocity of ether would be minus u. Would be minus u as observed from earth. अगर मैं खुद u डायरेक्शन u वेलोसिटी से मूव करता हूं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं खुद से नोटिस करूंगा तो जो दूसरी चीजें है वो माइनस u से मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में. राइट. जैसे मैं एक ट्रेन में बैठा हूं, मैं ट्रेन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेवल करता हूं. तो अगर मैं अपने आप को रेस्ट में मानता हूं तो मेरे को लगेगा जो साइड वाला बिल्डिंग्स है, जो साइड वाला पेड़ है, वो -60 पे ट्रेवल कर रहा है, वो बैकवर्ड्स ट्रेवल कर रहा है. तो विद द सेम कॉन्सेप्ट, इफ दिस होल सेटअप is moving with velocity u with respect to ether, then I can say the drift velocity of ether should be minus u as observed from earth. Right. So I will use this hypothesis, their hypothesis, to find my interference pattern from these ray 1 and ray 2. I will see the relative velocity of ray 2. इसको हटा देते हैं, next page. So the relative velocity of ray 2. ray 2 वो था जो horizontally travel कर रहा था along AC will be c minus u.
बना देते हैं छोटा सा। एक ये रे थी जो पास होके गई थी, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट बी था जो ऊपर गई थी। तो दिस विल बी सी वेलोसिटी से लाइट ने ट्रेवल किया और माइनस यू से ईथर कर रहा था। सो द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी सी माइनस यू। सो लेट्स से द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी वाज डी। एक डिस्टेंस डी मान लिया मैंने, ए बी और ए सी मेरा सेम था। सो द टाइम टेकन बाय रे वन, सॉरी टाइम टेकन बाय रे टू लेट्स से इज डी बाय सी माइनस यू। टाइम टेकन क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो मेरा स्पीड जो हो गया, जो रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट, the speed of light, relative speed of light when light is traveling from A point to C point, that will be C minus U, because U is the minus U is the ether velocity, relative ether velocity, C is the speed of light. So T1 क्या है? A से C में जाने वाला पार्ट है, A से C में जाने का टाइम है रे टू का। T1 रे टू इज D कैपिटल D डिवाइड बाय C माइनस U। अब मान लीजिए वो रिफ्लेक्ट होके सी से वापस आया है। सो नाउ द वेलोसिटी विल बी सी प्लस यू, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो इट द वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज अप टू सी प्लस यू। सो लेट्स कॉल दैट एज T2 ray 2. Now T2 ray 2 is D divided by C plus U। मानते हैं इस बात को? D डिवाइड बाय C प्लस U। T1 क्या है? A से C में जाने वाला टाइम। T2 क्या है? C से A में आने वाला टाइम, वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आने वाला टाइम। फॉर रे टू, बोथ ऑफ दीज टाइम्स आर फॉर रे टू। सो टोटल टाइम टेकन बाय रे टू, total time taken by ray 2 will be T ray 2 will be D divided by C minus U plus D divided by C plus U. So if I solve this, it will be very simple. It will be 2DC divided by C square minus U square. And if I take C square as common, it will be 2D by C divided by 1 minus U square by C square. So this time taken by ray 2, yes Neha? Yes, पूछ रहे थे कुछ? No, sir. Okay. So this T ray 2 will be the total time taken by this ray 2 to go from point A to C, then reflect, then it will take a reflection from point C, again it will come to point A. This will be T ray 2, this quantity. Now I will see what will be the time which a ray 1 will take to move upward, right? ये point A था, ये point B था जहां पे उसने रिफ्लेक्ट होना है। सो रे 1, एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। मैंने अभी आपको इस रे का, जो सेकंड रे था, उसका टाइम बना दिया है कि उसको कितना टाइम लगेगा ए से सी जाने में, सी से वापस ए आने में। टी डी डिवाइड बाय सी माइनस यू प्लस डी डिवाइड बाय सी प्लस यू। नाउ आई वांट टू फाइंड हाउ मच टाइम रे 1 विल टेक to go from point A to B and then from B to A back, right? That time I want to find. So that time will be, let's say कि जब फोटोन, जब लाइट पॉइंट ए से शुरू हुआ है और पॉइंट ए से शुरू होके बी पॉइंट की तरफ गया है, अप उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में, देन लेट्स से दो एक पॉइंट और मैं बनाता हूं जी पॉइंट, एंड लेट्स से कि इट विल हिट द पॉइंट जी, and with the duration at which it is going upward, the whole setup has moved
and this point G is now coinciding with point B. So the relative velocity, देखिए उस डायरेक्शन में तो दोनों वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, वो C भी ऐसे था, U भी ऐसे था. इस केस में क्या है, U आपका ऐसे है और C आपका ऐसे है, राइट. तो उस केस में टू मेक दैट कंपनसेशन, what I will write as this distance has to be C, this vector has to be, this velocity direction has to be C, this should be U. So this AB distance, the relative velocity of photon traveling towards AB has to be root C square minus U square. यहां पे मैंने वेलोसिटी के साथ ये चेंजेस किया, अगर मैं डिस्टेंस के साथ करता तो भी सेम रहता, तो भी वो सेम तरीके से आता. मान लीजिए मैंने बॉल ऊपर फेंका है, छत पे टच होना है, बट वो छत ही मूव कर रहा है मेरा. सो जिस पॉइंट पे वो टच होना था उस पॉइंट पे नहीं होगा, उससे पीछे वाले पॉइंट पे होगा. सो द टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस बॉल, दैट आई हैव टू एडजस्ट, राइट. उसका वेलोसिटी चेंज कर लो विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, और यू कैन चेंज द डिस्टेंस. So from point A to B, the time taken by ray 1, let's say I call this point, this time as T1 ray 1. T1 is designated for A to B, and it is, this time is for ray 1. So I am writing as T1 ray 1. It will be D divided by root of C square minus U square, right. Now in return journey also from B to A, again this will happen, again the same thing will happen, and I will the same time will, it will take same time, because again there is a relative velocity between C and U. So I can write this that time as again C square minus U square. So the total time taken by this ray 1 will be equal to twice of T ray, oh sorry, it has to be 1, T ray 1. So it will be T ray 1 will be equal to 2D divided by root of C square minus U square. Right? 2D divided by root of C square minus U square. Now, T ray 2 was this, and T ray 1 is 2D divided by, क्या आया था, 2D divided by root of C square minus U square. Root of C square minus U square. So this was the time taken by ray 1, this was the time taken by ray 2. Now I can see from the mathematics, the time taken by ray 1 is less than time taken by ray 2, and the distance traveled is same, then this time difference will give rise to a path difference. एक लाइट ऐसे गया है, एक लाइट ऐसे गया है, वापस आए हैं दोनों और वापस आए हैं. Now the time taken by these two different rays are different. So if time taken is different and distance is same, they will give rise to a path difference. वो जब वापस आएगी तो उसकी वजह से पीछे वाली जो लाइट होगी, जो D ray 2 आ रही होगी, वो डिले हो जाएगी, and that will include a, that will introduce a phase difference, right. That will introduce a phase difference. That phase difference I can calculate, but before that I want to find the time difference between these two ray, कि कितने टाइम डिले आ रहा है T ray 2 में और T ray 1 में. So this T ray 2 minus T ray 1 I have to calculate, and it will be, okay, so it will be 2D by C divided by 1 minus U square by C square minus 2D by C divided by 1 minus U square by C square root. Root I am writing as 1 by 2. Root I am writing as 1 by 2. So this thing I can solve with the help of binomial expansion. I can solve this. So this time difference I will solve with binomial expansion. It will be, delta T will be 2D by C. ये पहले वाला ऐसे कैसे रखा, इसकी पावर -1 है, 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर -1 है. सो -1 को अंदर ले आऊंगा, इट विल बी 1 बाय यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर minus 2 factorial u 4 by c4. Now u is small as compared to c, so I am neglecting all those terms. So it will be 1 minus u square by c square will be okay, यहाँ पे लिखते हैं
ये बन जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का पावर -1. So it will be 1 plus u square by c square if I apply binomial, and plus u4 by c4 plus u6 by c6, something like this. So all these terms I am neglecting. I'm just rewriting this 1 minus u square by c square minus 1 as 1 plus u square by c square. So 1 plus u square by c square. Second term, this term I am writing as minus 2d by c, and it will be minus half. ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा. इट कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस 1/2 u square by c square, right? 1 plus 1/2 u square by c square. So if I solve this, if I open this bracket, it will be 2d by c, 1 plus u square by c square minus 1 minus half u square by c square. So it will be, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस हाफ u स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. इट विल बी 2d by c into half u square by c square. So it will be d u square by c cube, d u square by c cube. Now this quantity d into u square divided by c cube is actually the time lag between ray 1 and ray 2. कि ray 1 और ray 2 में कितना टाइम लैग आएगा, ये वो क्वांटिटी है. दिस क्वांटिटी डिफाइंस द टाइम लैग बिटवीन द ray 1 and ray 2. नाउ during this time lag, the fastest ray, that is ray 2, will travel some extra distance. That extra distance क्या था ये? ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको. डेल्टा टी was du square by c cube. Now, corresponding to this delta t, there will be some extra distance traveled by ray 1, that will be okay c into delta t. c velocity से travel कर रही है, delta t उसको time मिला है extra travel करने के लिए, तो it will be c into du square by c cube. So it will be d u square by c square, right? Now this will be the extra distance. This shows that the optical path AC is longer than optical path AB by this much magnitude d u square by c square due to motion of the apparatus. ये डेल्टा x किस वजह से आया है, ये पाथ डिफरेंस किसकी वजह से आया है? This path difference is because we had considered that this whole setup is moving with respect to ether. That's why this ray 1 and ray 2, however we had made their optical path same, हमने उनका ऑप्टिकल पाथ सेम बनाने की पूरी कोशिश की है, उनका ज्योमेट्रिकल पाथ सेम रखा है, ऑप्टिकल पाथ में जो डिफरेंसेस आ रहे थे उसकी वजह से कंपनसेटिंग प्लेट लगाया है, but still we had made their optical path exactly same, but because of the relative motion of this setup with respect to ether, there has to be a path difference between both of the rays, right?